students. Today we are going to study about waves and nature of waves. It is a very interesting topic if you would like to play your interest in it. So the first question is, what are waves? A method to transport energy from one point to another without transfer of matter is called waves. मतलब के waves वो होती हैं जिसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक और उसमें मैटर अपनी जगह पर ही रहे. Let us have an example to make it way easier for us. For example, there are two persons having rope in their hand. When this person moves the rope, the wave occurs in it. And from this point, the energy is transferred to that point. It means that the object is on its place, but the energy transforms. That's what our definition says, that what are waves. The point is that we can create waves in rope and silky spring. Now, let us discuss in detail. Waves in the rope is said to be transfer wave, while the wave in the slinky spring is said to be longitudinal wave. तो जो वेव रॉप में फॉर्म होती है उसे हम ट्रांसफर वेव कहते हैं और जो वेव स्लिंकी स्प्रिंग में फॉर्म होती है उसे हम longitudinal वेव कहते हैं. What is ripple tank? Ripple tank is used to study waves. अब मैं इसकी पिक्चर आपके साथ शेयर करती हूँ. Waves. So the first type of wave that we have is transfer wave. Now it is transfer wave are wave that travel in a direction perpendicular to the direction of waves. Wave वो होती है जो वेव की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर चलती हैं. मतलब सी वेव्स किस तरफ मूव कर रही हैं फॉरवर्ड मोशन में और पार्टिकल कभी परपेंडिकुलर मीन्स कभी अप कभी डाउन एंड लाइक दैट. तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफर वेव. द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर वेव्स, वाटर वेव्स. वाटर में जो वेव्स बनती है वो ट्रांसफर वेव होती है. और गिटार स्ट्रिंग, गिटार की जो स्ट्रिंग जिसे हम बजाते हैं तो उनमें भी ट्रांसफर वेव ही फॉर्म होती है. Now how transfer wave are formed? So the first of all, the effect is amplitude. Amplitude is the maximum displacement moved by a point on vibrating body from the rest of the main position. Let us see our diagram. For example, this is the main position and that's a point where wave move. So इसमें जो displacement पैदा हुई उसे हम amplitude कहते हैं. Thrust, a point on a surface wave where the displacement of a medium at its maximum. Thrust वो point होता है surface of the wave का जहाँ पर displacement of the medium maximum हो. मतलब जैसे यहाँ पर wave maximum जा सकती है तो हम इस point को बोलेंगे thrust. Trough. Trough is a point on the surface wave where the displacement of a medium at its minimum. वो point होता है surface on the wave पे जहाँ पर displacement of a medium minimum होता है. जैसे यहाँ पे जो wave up से down आई तो जो down तक का distance है displacement form हुआ जिसे हम trough कहते हैं. Now second we have longitudinal wave. Longitudinal wave is way easier than the transfer wave. Longitudinal waves are the waves that travel in the direction parallel to the direction of the wave's motion. अब longitudinal wave वो होती है जिस डायरेक्शन में वेव मोशन करे उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी मूवमेंट कर रहे होते हैं. Example of longitudinal waves are sound waves. It is used in sound. You can also denote the longitudinal waves like that or like in the form of a spring. How longitudinal waves are formed? First of all, compression. In a longitudinal wave, this is a region where turn of the coil or particles are closer together than average. Means जहाँ पर particles एक दूसरे के सबसे ज़्यादा करीब हों उसे हम कहते हैं compression. Second and the last point is rarefaction. In a longitudinal wave, there is a region where turn of the coil or particle are further apart than average. वो पार्ट स्प्रिंग का जहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे के सबसे ज़्यादा दूर हो उसे हम रेरिफेक्शन कहते हैं. जैसे यहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे से सबसे ज़्यादा दूर है तो इसे हम रेरिफेक्शन कहते हैं. That's the end of the today video. Hope you guys like the video. Subscribe to my channel and stay tuned for new videos.